नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार, ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। 6 वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली। राज्य पोलीस व्यवस्थेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा। जनगणना 2027च्या या प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यामध्ये सर्व तयारी पूर्ण, असे कलेक्टर म्हणाले। लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अचूक आढेवारीचे महत्त्व कलेक्टर राजश्री शहा यांनी स्पष्ट। महिला आरक्षण बिलाबाबत जनजागृती करणार, असे म्हणणारे रघुनंदराव। जनतेचा पाठिंबा मिळणार असल्याचे भाजप खासदारांचे प्रतिपादन। निर्मलचे नूतन कलेक्टर म्हणून भावेश मिश्रा यांची नियुक्ती। माजी कलेक्टरांची राज्य इंटरमीडिएट बोर्ड सचिवपदी नियुक्ती। जिल्हा अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने बडीबाटा उपक्रम, मुलांना शाळेमध्ये प्रवेश द्यावा असे अधिकाऱ्यांचे आवाहन। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा पोलीस दलामध्ये महत्त्वाचा बदल झालेला आहे। अलीकडेच DGP पदावर पदोन्नती मिळालेले 6 वरिष्ठ IPS अधिकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची बंजारा हिल्स येथील कमांड कंट्रोल सेंटर मध्ये शिष्टाचाराची भेट घेतली। पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांनी यासाठी सरकारचे आभारही मानले। देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल असलेले जनगणना 2027च्या प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यात सर्व तयारी पूर्ण केल्याचे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी सांगितले। विकसित भारत 2047चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अचूक आराखडीचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले। नागरिकांनी जबाबदारीचे सहभागी होऊन संपूर्ण माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले। रविवारी कलेक्टर कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। जनगणना प्रक्रिया 2 टप्प्यात राबवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। पहिल्या टप्प्यामध्ये घरांची यादी तर घरांची जनगणना केली जाणार असून 11 मे ते 9 जून दरम्यान जनगणनाकार घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करणार आहे। तर दुसऱ्या टप्प्यातील गणना ही 2027च्या फेब्रुवारीत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। जनगणना प्रक्रिया ही यशस्वी करण्यासाठी पोलीस दलाकडून आवश्यक सहकार्य दिले जाईल, असे SP अखिल महाजन यांनी सांगितले। नागरिकांनी कोणताही गैरसमज न ठेवता कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे सुचवण्यात आले। నంబర్లు దేంతో కట్టబడి 4 నేల 2021 టార్గెట్ ఆగి 2027 దయచేసి గమనించండి, కేవలం ఒక్క మొబైల్ నెంబర్తో మాత్రమే లాగిన్ చేస్తారు। ఇంకా నమోదు తప్పనిసరిగా కుటుంబ యజమానితో చేయాలి। సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఒక్కసారి మొబైల్ నెంబర్ నమోదు చేయబడి హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ప్రారంభం కావడానికి 15 రోజుల ముందు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది। ఎవరైనా సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ద్వారా తమ వివరాలు ముందుగానే నమోదు ఆ తర్వాత OTP ద్వారా వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది। ఈ మొత్తం ప్రక్రియ సురక్షితమైనది, ఇంకా చాలా సులభమైనది। జిల్లాలో ఇంకా సమీపం అన్ని వివరాలను నింపిన తర్వాత వాటిని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి। అవసరమైతే మీరు ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు। డ్రాఫ్ట్ సేవ్ చేయడం లేదా ఆఖరికి దాచేయండి। बेसिकल आज आदिलाबाद जिला में ऑफिस ऑफ सेंसस एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंसस तेलंगाना ने जो मैंडेट दिया है सेल्फ एन्यूमरेशन का, जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2027, तो उसके हिसाब से आज 26 अप्रैल से 10 मई तक ये सेल्फ एन्यूमरेशन का एक्सरसाइज करना है। सेल्फ एन्यूमरेशन का पोर्टल जो है वो है
SE सेल्फ एन्यूमरेशन se.census.gov.in। ये कोई भी मोबाइल पे, नहीं तो लैपटॉप पे, नहीं तो उनके पास जो भी आईपैड है, किसी में भी सिस्टम में कहीं से भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछने के पहले आपको लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन जो है वो आप ड्रैग करके आपका जो घर है उसको आप इजीली देख भी सकते हैं, आसपास कौन सा रोड है, आसपास कौन सा लैंडमार्क है। उस टाइम वो ऐसी आईडी आपसे पूछते हैं। ऐसी आईडी बताने के बाद वो एन्यूमरेटर सारा डिटेल्स चेक करके फिर उसको अप्रूव करते हैं। और ये जो हाउस लिस्टिंग का ऑपरेशन है, ये जो है वो 11 मई से 9 जून तक चलेगा। तो अभी इस साल हमें ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेलंगाना में पहली बार नया तेलंगाना बनने के बाद ये पहली बार सेंसस हो रहा है और डिजिटल सेंसस हो रहा है इस बार। जो एन्यूमरेटर है उनको भी अपना खुद का डिवाइस कैरी करना है। सेल्फ एन्यूमरेशन का भी ये पोर्टल है और उसके बाद सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो सभी जो आवाम है उन सबको गुजारिश है कि आप जो पढ़े लिखे यूथ हैं, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हो गए, उनसे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप FAQ भी देख सकते हैं। FAQ के हिसाब से भी आपको उसकी क्लैरिटी आएगी। और आप सेल्फ एन्यूमरेशन का एक्सरसाइज हार्डली 2-3 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही पोर्टल भी बहुत ही जो है सिंपल सा पोर्टल है और इसके हिसाब से आप उसको फाइनल सबमिट करने के पहले ड्राफ्ट भी सबमिट कर सकते हैं, प्रीव्यू भी देख सकते हैं, फिर उसको एडिट करना है, फिर एडिट करके भी फाइनल सबमिट करें। ये मैं सारे आवाम को आदिलाबाद जिला में जितना भी हमारा ये सेंसस का एक्सरसाइज है वो अच्छे से चले और सब अपना डेटा जो है ढंग से उसको सबमिट करें। मैं ये सबको गुजारिश करता हूँ। महिला आरक्षण बिल आणि डिलिमिटेशन बाबत जनतेमधील गैरसमज आणि शंका दूर करण्यासाठी खासदारांच्या वतीने जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केल्याचे भाजप खासदार रघुनंदराव यांनी सांगितले। आदिलाबाद जिल्ह्यातील कोचिंग येथील स्थानिक आमदारांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। बिलाचे महत्त्व लोकांना समजावून सांगण्यासाठी आणि त्यावर जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कार्यक्रम घेत असल्याचेही म्हणाले। बिलाबाबत माहिती नसल्याने विरोधी पक्ष संसदेमध्ये अडथळे आणत आहे आणि खोटा प्रचार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला। बिल न मंजूर झाल्यास सर्वांचे नुकसान होईल असेही ते म्हणाले। జరిగింది ఏందనేది ప్రపంచానికి చెప్పాలి, మహిళా లోకానికి చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరం కూడా ఒక్కొక్కరం ఒక్కో ప్రాంతానికి వచ్చి అసలు ఎందుకు ఆర్టికల్ 81కి రాజ్యాంగ సవరణ 131 చేయాల్సి వచ్చింది, దానివల్ల లాభం ఏంది, చేయకపోతే కలిగే నష్టం ఏంది అనేది ప్రజలకి విడమర్చి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది। ప్రతిపక్షాలు చేసినటువంటి ఈ పాడు పని వల్ల దక్షిణాదికి నష్టం జరిగింది, గిరిజనులకు నష్టం జరిగింది, దళితులకు నష్టం జరిగింది, బీసీలకు నష్టం జరిగింది। ఉదాహరణకి 543 పార్లమెంట్ స్థానాలు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత భారత పార్లమెంట్ ని తీసుకుంటే ఈ పార్లమెంట్ లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు కేటాయించబడినటువంటి లోకసభ స్థానాల సంఖ్య 21%। 543లో 21% ని ఎస్సీ ఎస్టీలకు కేటాయించిన గణాంకాలను మనం చూస్తే దళితులకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో 84 మంది ఎస్సీ రిజర్వ్ కేటగిరీ కింద ఎంపీలు అవుతూ వస్తా ఉన్నారు। 47 మంది ట్రైబల్ బిడ్డలు, గిరిజన బిడ్డలు, ఆదివాసీ బిడ్డలు 47 మంది 543 కింద పార్లమెంట్ సభ్యులుగా వస్తా ఉన్నారు। దాంట్లో దళిత మహిళలు రావచ్చు, గిరిజన మహిళలు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వ్ కేటగిరీ కింద। చాలా మంది బీసీలకు అన్యాయం జరిగింది, జనాభాలో సగం ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా న్యాయం జరిగింది। ఎట్లా జరిగింది మహిళలకి? ఆల్రెడీ 2023 సెప్టెంబర్లోనే మీరు మహిళా బిల్లు పాస్ చేసిరు కదా అని చాలా మంది వాదిస్తా ఉన్నారు। 100% మహిళా బిల్లుని 2023 సెప్టెంబర్లో భారత ప్రధాని గౌరవనీయులు नरेंद्र मोदी गारी नायकत्వంలో మేము పాస్ చేసిన మాట 100% वास्तव। शिक्षणाने सामाजिक विकास साधता येतो आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींनी शिक्षणात प्रगती करून उंच शिखरे गाठत आहे हे अभिमानास्पद असल्याचे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शाह म्हणाले। तर सरकारने प्रतिष्ठेने राबवल्या जाणारा प्रजापालन प्रगती प्रणालिका या विशेष सप्ताहाचा भाग म्हणून रविवारी शहरातील बंगारीगुडा अल्पसंख्याक गुरुकुल मुलींच्या कॉलेजमध्ये आयोजित कार्यक्रमाला ते उपस्थित होते। सरकारी गुरुकुलमध्ये सरकारने पुरवलेल्या आधुनिक सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षणाचा विद्यार्थिनींनी पूर्ण लाभ घेऊन आपले ध्येय साध्य करावे असे ते सुचवले। शिक्षणाबाबत समर्पित भावना ठेवली तरच उज्ज्वल भविष्य घडते असेही त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। Guidance delivered by experienced faculty members in maths, physics, chemistry areas, model papers, and previous question. This is a non-teaching staff worked very hard to keep in with no strengths and spots. Few competitions like quiz,
communication skills are very, very important, which I see is developing in Timris. So I'm very, very happy. Yesterday also when I was interviewing the junior college results, so one principal, I suppose the principal madam is also here also. So they told me actually as compared to the last year, this year they have improved the results. So in the district there has been certain decline, but in the Timris the results are improved. So I thank, because last time when I had reviewed, so I was somewhat angry actually because there were decline in the junior college results at the Timris. But you took my words and you have ultimately implemented, and in the junior college results and the intermediate इसमें results आया वो Timris में थोड़ा improvement हुआ है ना last year के comparison में. तो उसके लिए जो भी principals हैं, lecturers हैं और बच्चियां हैं, बच्चे हैं, parents हैं, तो सबने efforts डाला है. तो उसी कारण से YPC के भी टॉपर्स काफी अच्छे मार्क्स आए. बाद में वो एक अच्छा जॉब लेके फिर बाद में वो सोसाइटी को और आगे बढ़ा पाती. बच्चियों के हाथ में अगर इनकम आ गया, मनी का अर्न करने का शक्ति आ गया, तो अल्टीमेटली सोसाइटी भी बहुत ग्रो करता है. तो एक मैं ये गुजारिश करता हूँ पेरेंट्स से, आपने भी जैसे अभी सुझाव दिए, सजेशंस दिए कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी होना चाहिए या फिर सिर्फ पेरेंट्स के साथ मीटिंग होना चाहिए, वो भी उनको मोटिवेट करने के लिए. तो अच्छा सुझाव है. हम पर्टिकुलरली उस पर अमल करने के लिए कैसे करना, हम पक्का उसको अमल भी करते हैं. और आज जो बेसिकली वेलफेयर वीक में हमने बड़ी बाटा कार्यक्रम में यही एक, और उसका भी यही एम है कि जैसे इंटर हो गया हो या फिर उसके बाद अपने 5th क्लास एडमिशन्स हो गए हो, तो जो भी एडमिशन्स है कहीं पर भी वैकेंसी नहीं होना चाहिए. तो ओवरऑल ओवर द ईयर देखा जाए तो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, बट स्टिल थोड़ी बहुत वैकेंसीज रह जाती है. जैसे लास्ट ईयर भी थोड़े कम, लास्ट टू लास्ट ईयर वैकेंसी ज्यादा थे, लास्ट ईयर फिर कम हुए. निर्मळ जिल्ह्याच्या कलेक्टर अभिलाषा अभिनव यांची बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी 2015च्या बॅचचे भावेश मिश्रा यांची जिल्हा कलेक्टर म्हणून नियुक्ती झालेली आहे. तर यापूर्वी ITEC विभागाचे सरकारी विशेष सचिव म्हणून कार्य करत होते. अभिलाषा अभिनव यांची तेलंगणा राज्य इंटरमीडिएट बोर्डाच्या या सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे. निर्मूलचे नूतन कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी रविवारी कलेक्टर कार्यालयातील आपल्या दलनात पदभार स्वीकारला. अतिरिक्त कलेक्टर बी व्यंकटेश्वरलू, किशोर कुमार आणि विविध विभागांचे जिल्हा अधिकारी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील महसूल आणि गृहनिर्माण समस्यांबाबत 27 तारखेला हैदराबादमध्ये उच्चस्तरीय बैठक घेणार असल्याचे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी सांगितले. या बैठकीत महसूल, अबकारी, कामगार विभागाचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहे. संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील कलेक्टर आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी हजर राहणार आहे. जिल्हानिहाय प्रलंबित समस्या, गृहनिर्माण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि महसूल संबंधित मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. तर या पार्श्वभूमीवर सोमवारी कलेक्टर कार्यालयामध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचे कलेक्टरांनी सांगितले. नागरिकांनी यांची नोंद घेऊन सहकार्य करावे असेही आवाहन केले. डिमांड
शाळेत मुलांना शिक्षणासोबत पौष्टिक आहारही मिळतो असे जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी शेख कलीम म्हणाले. प्रजापालना प्रगती नियोजन या 99 दिवसाच्या ऍक्शन प्लॅनचा भाग म्हणून रविवारी KRK कॉलनीमध्ये आयोजित बडीबाटा कार्यक्रमात ते सहभागी झाले. सरकार अल्पसंख्याक निवासी शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आणि सर्व मूलभूत सुविधा पुरवत असल्याचेही सांगण्यात आले. पालकांनी आपल्या मुलांना या शाळेमध्ये प्रवेश देऊन त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवावे असे आवाहन त्यांनी केले. हॉस्टल 6वीं क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक गवर्नमेंट से पूरा फ्री एजुकेशन है. हम लोग टेमरी से आके हैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बन रही, बड़े बिल्डिंग बालाजी नगर की टाइमिंग पे वहाँ से आए हम 5th क्लास से एडमिशन. आज प्रजापालना प्रगति प्रणालिका कार्यक्रम के 99 डेज के कार्यक्रम के हिसाब से आज वेलफेयर वीक चल रही है. वेलफेयर वीक का 7वां दिन है. आज 7वां दिन में बड़ी बाटा प्रोग्राम है. बड़ी बाटा प्रोग्राम कंडक्ट करने के वास्ते हम हमारे यहाँ महिला में से स्टूडेंट्स और हमारे टीचर हमारे प्रिंसिपल और हमारा ऑफिस स्टाफ सब लोग हम 100-200 लोग यहाँ जमा हुए हैं. यहाँ पर हम पूरे KRK कॉलोनी में घूम के हर घर को घूम के बच्चों को नई बिल्डिंग गर्ल्स 2 की गर्ल्स 1 की जो भी यहाँ पर KRK में नए CM के परसों इनाग्रेशन करे. इसलिए अब इसका अपन एजुकेशन का उनको बोलते हुए माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कंपलसरी गर्ल्स को तो यहाँ पर कॉलेज बाजू में है. बॉयज के भी 2 कॉलेज नए बने गए हैं, वो बंगारीगुड़े में है. इस वास्ते अपने कहने आदिलाबाद में 1st से लेके 5th से लेके इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन है माइनॉरिटी के वास्ते. इसलिए हर कोई माइनॉरिटी स्कूल में डालना बोल के कोई बोलते अपने होम तेरा एजुकेशन में पीछे है. इसलिए कंपलसरी बच्चे पढ़े लिखे तो आगे बढ़ सकते. कल के दौर में पढ़े लिखे बहुत जरूरी है. इसलिए मैं यहाँ के पूरे पेरेंट्स से KRK के पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट DMW एज DMW मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर कोई अपने यहाँ गर्ल्स का तो बाजू में है KRK में. इसलिए आप बच्चों को यहीं एडमिशन कराइए और बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाइए. इन दोनों पढ़े लिखे तो आगे बढ़ सकते. यही मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ. वासवी मातेने दाखवलेल्या मानस सेवा आणि अहिंसेचा मार्ग आजच्या पिढींची प्रेरणादायी असल्याचे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा म्हणाले. रविवारी स्थानिक अशोक रोडवरील श्री वासवी कन्या परमेश्वरी देवीच्या मंदिरामध्ये या देवीची जयंती उत्सव अधिकृतपणे मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. आदिलाबाद जिल्हा आणि या प्राचीन मंदिरातील अटूट नात्याचा उल्लेख करताना दसरा नवरात्र उत्सव दरवर्षी मंदिरापासून मोठ्या थाटात सुरू होतो असे कलेक्टर म्हणाले. वासवी देवीच्या कृपेने जिल्ह्यातील सर्व नागरिक सुखी राहावे आणि जिल्ह्यात शांतता सुव्यवस्था नांदावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. वासवी देवीचा संदेश स्मरून यांनी दाखवलेल्या मानसेवा व अहिंसेचा मार्ग आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही सांगण्यात आले आणि गौरव करण्यात आले. వాసవి మాత అంటే ఒక మానవ సేవ ఏ విధంగా చేయాలి, అహింస మార్గంలో అందరూ ముందుకు వెళ్ళి మానవ సేవ చేస్తూ అందరికీ అప్పుడు దిశానిర్దేశం ఇస్తూ మళ్ళీ అప్పుడు కూడా అందరూ మహిళలు వారితో కష్టపడి మళ్ళీ ఏవైతే అత్యాచారాలు ఉన్నాయో దానికి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక మార్గనిర్దేశం ఇస్తూ ఇప్పుడు కూడా మన ప్రభుత్వం కూడా అదే దిశలో ముందుకు వెళ్తుంది. మానవ సేవ కానీ అహింస కానీ ఇందాక రాజేశ్వరరావు చెప్పినట్టు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కూడా అదే ఒక రూపంలో ఒక పత్ర మానవ సేవ రూపంలో. సో మీరు ఇందాక ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయి 25 లిస్టు మీరు ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశారు. మళ్ళీ నేను కూడా మాట్లాడి నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో తప్పకుండా వారికి శాంక్షన్ చేయడానికి बेला मंडळातील सांगली परिसरामध्ये बनावट बियाणे विक्री होत असल्याच्या माहितीवरून छापा टाकून 4 जणांना ताब्यात घेण्याचे आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी यांनी सांगितले. बेला मंडळ केंद्रातील पोलीस ठाण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी तपशील दिला.
आरोपी किशोर रेड्डी, पवन, कुणाल आणि कुलदीप यांच्याकडून 150 किलो बनावट कापूस बियाण्याची पॅकेटे, 60,000 रुपये रोख आणि एक बाईक जप्त करण्यात आले. आरोपींना ताब्यात घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. बनावट बियाणे विकण्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. అంటారు అది కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక కాంపిటీషన్ అంతా మన వీడియో అది హెలికాప్టర్ అనే ఈ కాటన్ సీడ్ ప్యాకెట్స్ కలిగి ఉన్నారు. ఇవి అక్కడ అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వెంటనే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని పిలిచి ఈ ప్యాకెట్స్ అన్ని వెరిఫై చేయించగా ఇవన్నీ కంప్లీట్ ఫేక్ స్పురియస్ సీడ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు ధృవీకరించడం జరిగింది. మేము ఒక కాంప్లీట్ తీసుకొని వారిపై అక్కడ ఉన్నవారిపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దానిలో అక్కడ ఉన్నవారిలో ముఖ్యంగా జిట్టావార్ కిషోర్ రెడ్డి, సాంగ్డి విలేజ్, బేలా మండల్, A2 రత్తావార్ పవన్, జామ్ని జరీ మహారాష్ట్ర, A3 నవగల్లే కునాల్, సాంగ్డి విలేజ్, బేలా, A4 కుల్దీప్ ఠాక్రే, మణియార్పూర్, బేలా. వీరు నలుగురు అక్కడ ఈ నకిలీ విత్తనాలతో పాటు అక్కడ దొరకడం జరిగింది. వీరిని ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఈ కిషోర్ రెడ్డి అనే పర్సన్ ఇంతకుముందు నరేష్ క్రాప్ సైన్స్ కంపెనీ, ఇది గుజరాత్ సీడ్స్ కంపెనీ, దానిలో ఏజెంట్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది. రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరకబట్టడం జరిగింది. దీనిపై ఎలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కానీ, ఎక్స్పైరీ డేటు, బ్యాచ్ నెంబర్, ఎంఆర్పి, తర్వాత ఇవి కూడా లేవు. జనరల్గా ఒరిజినల్ బ్రాండెడ్ సీడ్స్ పైన ఇవన్నీ ఉంటాయి మొత్తం. అది క్యూఆర్ కోడ్ కొడితే కూడా మనకు తెలుస్తుంది. దీనికి క్యూఆర్ కోడ్ కూడా లేదు. కంప్లీట్ ఎలాంటి డాటా లేకుండా రైతులను మోసగించాలన్న ఉద్దేశం కొద్దీ వీళ్ళు ఈ బ్రోకర్లు వాళ్ళ బెనిఫిట్ గురించి ఇవి నిజమైనవని చెప్పి నమ్మిస్తూ నకిలీ విత్తనాలు అమ్ముతున్నారు. మేము రైతులకు మా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు సీడ్స్ కొనేటప్పుడు ఆథరైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర మన షాప్లో మాత్రం సీడ్స్ షాప్లోనే పర్చేజ్ చేయండి. పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఈ సీడ్స్ पॅकेटला पైన टोटल विवराలు ఉండాలి. आदिलाबाद शहरातील मारवाडी शाळेमध्ये असलेल्या श्री बालाजी वेंकटेश्वर स्वामीचा तिरुमल कल्याण ब्रह्मोत्सव मोठ्या थाटात सुरू झाला. उत्सवाचा भाग म्हणून रविवारी स्वामींच्या कल्याण सोहळ्याचा डोळ्यांचे पारणे फेडणारा ठरला. मोठ्या संख्येने भाविकांनी हजेरी लावून देवाच्या या कल्याण सोहळ्याचे दर्शन घेतले. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या.
6 वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली. राज्य पोलीस व्यवस्थेवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा. जनगणना 2027च्या या प्रक्रियेसाठी जिल्ह्यामध्ये सर्व तयारी पूर्ण, असे कलेक्टर म्हणाले. लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अचूक आढेकारवारीचे महत्त्व कलेक्टर राजश्री शहा यांनी स्पष्ट. महिला आरक्षण बिलाबाबत जनजागृती करणार, असे म्हणणारे रघुनंदराव. जनतेचा पाठिंबा मिळणार असल्याचे भाजप खासदारांचे प्रतिपादन. निर्मलचे नूतन कलेक्टर म्हणून भावेश मिश्रा यांची नियुक्ती. माजी कलेक्टरांची राज्य इंटरमिडिएट बोर्ड सचिवपदी नियुक्ती. जिल्हा अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने बडीबाटा उपक्रम. मुलांना शाळेमध्ये प्रवेश द्यावा, असे अधिकाऱ्यांचे आवाहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.